तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आए हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे सारे राइडर्स को बताया जाएगा कि कैसे चलाना है, कहाँ पे ब्रेक लेनी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। हम पिट लेन में खड़े हैं। देखो यहाँ पे डुगाटी, BMW, कावासाकी सारी बाइक्स हैं। आप देखोगे तो ये एक कवर चढ़ा हुआ है। इस कवर को कहते हैं टायर वार्मर। तो जब टायर गर्म होता है तो रोड को अच्छे से ग्रिप करता है। फ्रेंड्स, देयर इज अ क्लासरूम सेशन इन प्रोग्रेस। आओ देखते हैं कि वो क्या सिखा रहे हैं। अलार्म बजा, उसके बाद ये रेड वाली मोटरसाइकिल आई, another motorcycle, and there it goes. So friends, this is Ajit Bhaiya. Ajit Bhaiya, can you tell a little about yourself to our viewers? Hi Sparsh. So my name is Ajit and I've been running Racing Academy from past 4 years, and I have about 9 years experience in the industry. So yeah, we have been successfully conducting training programs in Delhi, Coimbatore and Chennai. So these are the 3 tracks available in India. तो
अगर मेरे जैसे बच्चों को बाइक राइडिंग सीखनी है तो क्या वो सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं? Yes, that's a very good question. अभी ट्रेनिंग जो होता है बच्चों के लिए, it starts at the younger age. When I say younger, it might be even 4 years. Yeah, there are a lot of kids who are of 4 years, 5 years, trying out how to ride. They are not taking part in any activities. They are just getting a hang of motorcycle. जैसे कि इस छोटे small motorcycles, scooters रह सकता है. नहीं तो it can also be one of these ovales. So these are the small motorcycles which are good for kids. So if somebody wants to learn how to ride a motorcycle, they can start from the age of 4. And it depends on the parents as well. It's not only the kid. If parents are interested, the kid is also interested. तो आप जो करते हो मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट बनाया है। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि वो गिफ्ट क्या है, अब यहाँ का रिएक्शन देखते हैं। Okay, looks nice. Okay. It's a Sparsh paper bike. Oh, nice. Very nice. You made it? Yes, this is wholly made of paper templates. Yes. Very nice. Beautiful. Thank you. Thank you, Sparsh. You like bikes and you all do the stuff of bike racing and all that. So that's why I thought I can give you a gift. Thank you so much. It means a lot. It means a lot, Sparsh. फ्रेंड्स मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट फाइनली वी हैव टू लीव। आपको तो आवाज आ ही रही होगी कि इतनी अमेजिंग बाइक चल रही हैं और सब ऐसे जाती हैं, फिर टिल्ट होती हैं। दैट इज सो अमेजिंग। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू कम हियर। आई एम सो अमेज्ड टू सी ऑल द बाइकर्स मूविंग लाइक दिस। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक ओल्ड Fiat भी खड़ी हुई है and it's looking just brand new. तो फ्रेंड्स आप भी बाइक बनाओ और फोटोज हमारे साथ फेसबुक पे शेयर करो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।